Whew. Look at this lighting. I know exactly what to do. Let's go. Whoa. We cannot do a shoot with this or this on the bike. We need a clean bike. Have you ever felt? Are you listening? Hello ladies and gentlemen, welcome to your YouTube channel Buff Moto. आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वी स्टार्ट विद द ट्रैफिक जैम. वाओ, है ना इंटरेस्टिंग डे. ये खाली रोड फाइनली, लेकिन अंदर की गलियां हैं और तेरी गलियां में है पब्लिक. आई नो मैंने रेड लाइट जंप किया, बट इफ यू सी आई शो यू छोटा सा कट आउट. दिस गाय स्टैंडिंग देयर, ही इंडिकेटेड कि जाओ जाओ जाओ, and he's not a traffic police, but these guys stand with traffic police over there and they control the traffic. So don't judge me, I was slow enough to brake completely. So guys, coming back to the fact of the matter, the bike is dirty. It's dirty. I mean, if you guys love your bike, then you ride in the rain. Of course you ride in the rain, but when you ride in the rain, you know what happens to the bike, and that has happened to this bike. तो अभी इसको साफ करना पड़ेगा, obviously, right? So today the first objective is going to be, I'm going to go and meet my friend. You guys have seen him in the Republic Day ride वाला video. I'll put that ride का link over there ऊपर आई में. So now he has a Repsol Fireblade, lovely bike, and both of us are going to go for some detailing. अंदर से खोद के घुसा के कचरा निकाल के बाइक को साफ करेंगे. That is what detailing is, in case you didn't know. Once we reach the shop, I'll tell you क्या कौन सा शॉप है, कहाँ जा रहे हैं. आएगा सब समय के साथ आएगा. सब्र रखे, सब्र का फल मीठा होता है. ठीक है, चलो चलते हैं अब. लेकिन चलते रहे, आपका सवाल है कि हम जा किधर रहे हैं. हम सब, क्योंकि आप भी देख रहे हो, आप भी हमारे साथ चल ही रहे हो. हम लोग जा रहे हैं अंधेरी की. ओ पगलू, एक इंडिकेटर का ब्लिंक दिया, घुमा दिया. ऑब्वियसली आप लोगों को अगर डिटेलिंग कराना है और उस शॉप का डिटेल वगैरह चाहिए, सब दिया जाएगा. एंड डिटेलिंग करा के अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाएगा कि क्या है, कैसा किया, क्या क्या हुआ. भाई इतना ट्रैफिक क्यों है आज. Where is he? Is he here? I bet he's not here. Chalo, time to wait for him. He's finally here. So late. Finally. Let's go. Took him long enough. Look at this asshole riding a Repsol with a C project. Going slowly. So now, since we have come over here, Andheri East में पहुंच चुके हैं, the first thing we will do is our location. Our location is the location for the shop. Basically, is right next to Honda Wing World. इससे मुझे वो याद आता है, अमेरिकन्स खाली रोड पे चला रहे होते हैं. Oh, we got so much traffic today. Traffic. I'm so tired of riding in traffic. बेटा जब 5 मिनट तक क्लच पकड़ के रखना पड़ता है ना, उससे ट्रैफिक बोलते हैं. By the way, Honda Wing World. From here you go inside, and सामने you can see वो cleaning वगैरह चल रहा है. That's Motorshine.
And this is Varun. Nice to meet you. Pleasure's mine. Just one sec. So we have reached here at Motorshine. अभी Motorshine is right next to Goldwing. जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया, this place is big, spacious and their facilities are amazing. अभी let's take a look around. क्या क्या facilities भर के रखे हैं. That's Repsol. फोटोज चल रही हैं. बिफोर फोटोग्राफ्स. माई R1. कंडीशन बहुत ख़राब है. मिस बफ मोटो भी आई हुई है आज. फेस नहीं दिख रहा. नो फेस रिवील. से हाय. आज फेस नहीं दिख रहा. डोंट वरी. Let's get it started, bro. Yeah, let's get it started. Okay, so we are finally at Motorshine. This is Varun. He is the owner of this place and he operates this place. He's the manager. He does everything right now. Correct? So Varun, thank you for having me. PCMD, Pune ka Managing Director. Pune ka Managing Director. Perfect. PCMD है ये. And now we'll start with the details. So we are going to do a full detailing of the bike. That's what we call it. Correct. So if you could just tell me कि क्या-क्या steps involved होते हैं in this full detailing of our bikes. So basically, whenever any bike comes in for a detailing and a polishing job, first point of contact is a quick wash. After the quick wash, we start with the detailing part. Detailing basically includes the full thorough cleaning of a bike, including your chains, spokes, underpipes, hoods and everything, wherever a basic hand cannot reach. After that, we'll start with the polishing treatment. But before finalizing the polishing, we'll give another quick wash to the car, to the bike, sorry. And then we will do a final wax or a glaze coat to protect the treatment that we have done. Okay. This full procedure for a bike roundabout takes around 3 to 4 hours. Okay, so for one bike it takes 3 to 4 Correct. hours. Okay, so this full detailing that we are going to do right now, how much would it generally cost? Varies from bike to bike. Okay. Like a Honda, they don't have chrome on it. If you compare to a Harley, it is full of chrome. So the treatment varies from 5,000 to 8,000. If it is high on the chrome or high on polishing, the cost will increase. It is a regular, like say a Repsol or Fireblade, it will cost around 5,000. 5,000 for Fireblade, around 8,000 for your big Harleys with chrome on it. Correct. And obviously variable with the size. Correct. Super Glide से लेकर Street 750 change हो जाएगा. Change होते रहेंगे. Exactly. So it depends on your bike, but general idea is 5 to 8,000. अभी you'll see the progress, you'll see how the work goes, and you'll see क्या-क्या steps होते हैं and how the outcome is at the end. And obviously जैसे जैसे steps चलता जाएगा, you'll get to know on the video as well कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. So let's go to the bikes. Thank you. ये phone भी आ गया सही time. Okay. So we are outside. The bikes are here. और अभी सफाई के लिए एकदम ready हो रहे हैं.
That's it. We are done. It took us about कितना time लगा? 4 hours. 4 hours. As stated. Fucked it up. That's it. We are done. It took us about 4 hours to be completed. My bike, Repsol, दोनों ready हैं. Now the detailing. Full honesty, बहुत अच्छे से लगा. They had completed polishing and waxing, and apart from that, ठीक है, when you get that done, bike में shine आ जाती है. But some things which cannot be done generally, like the color of my exhaust. I have not seen this color even since the time I have bought this bike. So this is the original stainless steel color. This is a stainless steel exhaust. तो इसका ओरिजिनल कलर अब जाके मेरे को देखने को मिला. इट हैड टर्न गोल्डनिश ब्राउन कलर जो भी उसका होता था बर्न होके, बट नाउ फाइनली. एंड प्रेज द लॉर्ड, बारिश हो गई नाइसली. तो अभी बाइक इधर ही छोड़ेंगे एंड बाद में हम लोग कलेक्ट करके जाएंगे. बट यू कैन सी द वर्कशॉप इज़ बिग, नाइस. कार्स ऑल्सो यहाँ पे ऑब्वियसली यू सीन द बोर्ड, कार भी डिटेलिंग होता है, बाइक्स भी होते हैं. आई एम हैप्पी. होप यू लाइक द शॉट्स जो भी हमने शॉट्स लिए थे. एंड सर प्लीज़ आइए. अगेन द मेन मैन वरुण, थैंक यू सो मच Pleasure's mine. फॉर एवरीथिंग. बहुत मज़ा आया. वी हैड अ फन. अच्छे से वी सॉ ऑल द जो भी काम होता है हमें खुद The से gigs देखने को and मिला. pictures. येस, गिग्स एंड पिक्चर्स, हमें सब कुछ देखने को मिला जो भी यहाँ पे होता है इनके प्रोसेस के लिए. एंड ऑब्वियसली वी हैड आवर ओन पीस ऑफ माइंड जब ये सब हमें सामने से देखने को मिला करने को. वी डिडंट हैव टू गो समवेयर बिकॉज इट डिड नॉट टेक देम 24 आवर्स, इट डिड नॉट टेक देम 10 आवर्स. 4 आवर्स में सब करके दे दिया. थैंक यू सो मच. होपफुली नहीं, डेफिनेटली आई सी यू अगेन. And I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye. Here we go.